हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल गराज। तो आज अपने पास कास्टिंग आयरन बेल्ट पुली आई है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन साइट पे सीमेंट मिक्स करने का मशीन होता है, तो उसका वो एक पार्ट है। तो इसके अंदर का जो होल दिख रहा है आपको, ये बड़ा हो चुका है। तो हम उसको अभी ब्रास ब्रेजिंग वेल्डिंग से भर देंगे और फिर उसके बाद लेथ मशीन के पास लेकर जाकर उसको अच्छे से शेप में कट करेंगे। पर हमारा काम बस वेल्डिंग का ही है, तो हम उनको वेल्डिंग भर के देने वाले। तो आप देखिए कि ब्रास ब्रेजिंग कैसे करते हम। वो जो गाला बड़ा हो चुका है, तो उसको हम कैसे वेल्डिंग करके परफेक्ट शेप में लाते हैं। तो आप देख सकते हो ये पार्ट है जो बड़ा है, और वेल्डिंग करने से पहले हमें वो पार्ट को अच्छे से गर्म करना है। इसलिए हमने आज बड़ा टॉर्च लिया है, आपको दिख रहा होगा। तो अगर मेटल अच्छे से गर्म होगा तो ही अच्छे से वेल्डिंग उस पर बैठ सकती है। तो आप देखिए कि हम उसको कैसे हीट करते हैं और फिर उस पर ब्रास ब्रेजिंग वेल्डिंग करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझेगा, कंटिन्यू देखते रहिए। तो अभी आप देख सकते हो जो हमारा कास्टिंग मेटल का मटेरियल है वो अभी गर्म होने ही आया। तो अभी हम उस पर ब्रास ब्रेजिंग वेल्डिंग करने वाले। तो आप देखिए आगे कि कैसे हम उसको राउंड घुमा के अच्छे से अंदर का जो गाला है वो भरते।
तो अभी आप देख सकते हो हमारी जो वेल्डिंग है वो अच्छे से अभी कंप्लीट होने आई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऑटोमोबाइल गराज को। और अगर आपको कुछ क्वेरीज होगा तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उधर मैंने फ़ोन नंबर भी दिया है और एड्रेस भी दिया है। अगर आपको आना पॉसिबल है तो आप आ सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो वेल्डिंग कितने अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी इसके बाद जो ये पार्ट है वो लेथ मशीन पर जाएगा और फिनिशिंग में कट होगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऑटोमोबाइल गराज को और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।